RJs have the power to tell stories, right? And this is an RJ couple who come on radio, of course, Sachin and Neeti, but they also they also tell stories to their son together. And we spoke about Gigi and Daddy yesterday. So, the power of both parents telling a story to the child, they will tell you how they do it, what they do, beyond, of course, their RJing. So, Sachin has been with Red FM for the last 20 years. Don't go by his age or his looks, he still is a young man. And yeah, so come. Thank you. And now I would invite my better half, actually, much, much better than me. Somebody who toppled me in ratings as well, and eventually I decided कि अगर मुझे रेडियो का करियर करना है तो इनको अपनी साइड पे ले लेता हूँ. So thankfully we met at Red FM, and thanks to Nishant, that's how we were growing together. And Yeah, I think Neeti Nishant, is my better half, and Neeti, she deserves a bigger hand. Hi. No. Please, guys. I didn't know that Nishchit had not introduced the better half. I have to get my points, na? Okay, all right. मुझे घर जाना है अच्छे से तो please, yes, we can see. Please take your Hi. There is somebody else. I have somebody prettier. We can sit here also. Yeah. Yeah, I know. Make yourself comfortable. Yes, Neil, do you want? Just wipe your face also, beta. Okay. So now, सबसे पहले तो thank you for being the audience. क्योंकि रेडियो पे ना हमको लोगों को देखने को नहीं मिलता. तो सामने लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं. So रेडियो जर्नी हम दोनों के लिए बहुत पहले शुरू हुई. I started in '98 and with All India Radio. तब private FM stations नहीं थे. And when 2003 Red FM started, Nishant was heading our team. We were putting together all the creative minds, and we started with a rock star team, such mein. And with very limited resources, we created a stir. And I think next year or so, then she completed a mass comm. She joined, and we were on the same team working. Fell in love, broke up, fell in love, broke up, fell in love, and eventually got married. And then, yeah, you go ahead. And after a couple of years, of course, we're Mama and Papa now, and the whole RJ profile that's on the work front, but when it comes to, it's like a real life and a real life. Real life, Mama, Papa. And that's where our storytelling journey actually began. Radio पे हम कहानियाँ बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं. A lot of people confide in us as well. But when it really comes to retaining attention of your child or telling him or her to do the right thing and not do something, that's when the magic of storytelling actually comes in. So it's not the fairy tales, it's not the books for a 2-year-old or a 1-year-old or a 3-year-old. It's just how you weave in a story on a day-to-day basis from your real life when you were as a kid. So if you have a 3-year-old, I'm going to give you a lot of examples because that's how, on a day-to-day basis, you'll be able to understand how to weave in a story as a mother, as a father. Yeah, no, I think it's back, yeah. It's back, yeah. If there are kids, I can see there are a lot of, these tiny tots here. Now, instead of just telling them that, no, don't do this, we don't do that. No direct instructions. What I have learned as a mother, you always have a story. There's a Mr. Chair. There's a little Mr. Chair. You're sitting on the chair. Can we just say hi to the chair? Now, if the child is bumping the chair around or dragging the chair around, you know what? Mr. Chair is really getting hurt. So let's not hurt the legs, because those legs are like, we get hurt in our legs, we're going to cry. Mr. Chair is also going to cry. These are small little examples. And these kind of day-to-day examples resonates with a child, especially till the age of 7. And why I say that? Because
till the age of 7, the, a child is one with the universe. So everything around the child, whether it's a table or a chair or a bed or a stone or a pebble or a twig, everything comes to life because he thinks or she thinks they're one. They're friends. They have a life. They're not non-living objects or things around. So around that, you can really build up a story. And if it's about conveying something to the child, go back to your childhood. If I were to talk to my 6-year-old and say something, don't do this. No, I'm sorry, they don't understand. They're going to go back and say the same thing or do the same thing again. What you need to do is just come back, and this is something out of experience I'm telling you guys and sharing with you guys. You just have to go back to your childhood. When I was 6-year-old, something happened, and then this, and then that, and the story starts. And the it child, works. It really works. The child's going to just look at you all in awe, like, huh? Phir? Aage? Really? Then? Okay, And- we want to do that. We want to say, Aage, fir, really? Really? Come on, Sachin, something from the past. Something as a See, सबसे पहले 7-year-old. तो मुझे ये लगता है कि husbands especially, we are very good storytellers. चाहे मतलब ऑफिस में काम में तो जितनी कहानियां हम कर रहे हैं, बट घर पे बहुत कहानी रोज मारते हैं ना. The only difference is we have to just add little sensitivity to it, and that is something which, theater में या radio पे या television, in some mediums में we were storytellers with a different objective. You have to tell a story, या तो आप थिएटर की मतलब कोई कहानी बता रहे हो किसी प्ले में, otherwise radio drama you're building up, or you're building an interview where you have a story. But when it came to when our world changed, when Neil, our son, came into the picture, and she was doing a lot of reading, various authors, various styles across the world, how we can have sensitivity. And one thing which I learned from some greats, कि जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दैट, कि उसमें जल्दी नहीं है किसी को. हर चीज़ में रॉक स्टार नहीं बनाना है और बहुत जल्दी जल्दी आपको नंबर्स नहीं क्रिएट करने हैं, स्पेशली विद किड्स, बिकॉज इफ यू डीलिंग विद सेंसिटिविटी तो मज़ा आता है. सो वही जो कहानी हम रोज एज हस्बैंड्स कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे जस्ट लाइक, हाउ डू यू गाइज डू इट. मैंने, इट्स वेरी सिंपल. आप में सबसे पहले तो सेंसिटिविटी आपको डेवलप करनी है कि मुझे उससे मजा कर रहा है. आई हैव टू हैव फन विद हिम. आई डोंट हैव टू इन्वॉल्व हिम फॉर द सेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज आई हैव टू जस्टिफाई माई टाइम विद हिम, बट डूइंग something which is very individual. Like Neil and I, we have a Mr. Moon series, या फिर वो क्योंकि रात की एक छोटी सी कहानी होगी जो कि ऑर्गेनिकली अपने आप बन गई. उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि एक मिस्टर मून की कहानी होगी कभी भी. इट जस्ट सो हैपेंड, आई थिंक, व्हेन ही वाज 2, एंड इट्स ऑन टिल नाउ. सो इट्स बीन 4 years. हर रोज तकरीबन मिस्टर मून की कहानी होती है, जहाँ पर नील और उसके फ्रेंड्स दे आर प्लेइंग इन अ पार्क, जहाँ पर बर्ड्स एंड बीज एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड दैट लाइन नीति रोड, बिकॉज उसमें नेचर के एलिमेंट्स हैं. सो वो पार्क में खेल रहे हैं, एंड सम नॉटी monster comes in, and that he decides every night. So it can be a fan monster, it can be a shoe monster, and they are not bad. वो बहुत naughty हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा trouble करने आए हैं, they're just trying to do something. So now all the kids, they come to Neil, and it's not just Neil, in his mind is baby monkey. So so they come to baby monkey, and baby monkey tells them, let's go to Mr. Moon's palace. It's a beautiful white palace in the sky, and he has a peacock. तो उस peacock पे बैठ के हम Mr. Moon के पास जा रहे हैं. वहाँ पे एक milky river है, वहाँ पे white trees हैं, grass is also white, and he's got a long white beard. He looks like Santa Claus. He loves babies. और वो Mr. Moon बच्चों को एक रोज एक कोई चीज़ देते हैं. Like for example, if fan monster is saying कि I will make a biggest fan in the world in the park, then they're saying कि park में how will we play if you make a big fan in the park? So Mr. Moon that night will give them a magic switch कि अगर fan monster उसको on करेगा, but
magic switch से these guys will be behind a tree and they'll switch off. And he'll keep trying it. And eventually fan monster will say, my fan is not working only. So he'll say, guys, please help me out. So they'll say, your fan is very good, but take it to a place where people don't have fans. We don't need it in the park. 5 मिनट की कहानी है वो मेरी और नील की अपनी ऑर्गेनिकली डेवलप हुई चीज़ है और वो सालों से चल रही है उसमें रोज यही पैटर्न है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड दिस इज बिकॉज शी इज गिवन अ स्ट्रिक्ट टाइम लाइन ऑल्सो कि उसको टाइम पे सोना है तो ये नहीं कि तुम रेडियो के तरह लगे और कहानी चले जा रही है इट हैज़ टू बी शॉर्ट सॉफ्ट इट हैज़ टू हैव ब्यूटी और उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है उसकी तरफ से कुछ इनपुट्स हैं तो उसकी कहानी उसको भी सेटिस्फाइंग लग रहा है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर कि सब बच्चे खुश हैं वो फैन चला गया और ये रोज़ उसमें क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी तो एज ए पेरेंट उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चे के लिए समझना उसे रिलेट करना मुश्किल है और उसमें इतना मजा आता है सो यू कैन हैव योर ओन कैरेक्टर्स बिकॉज ऑल ऑफ अस वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द किड्स डिफरेंट नेम्स इन आवर फैमिली मेम्बर्स या कुछ फेवरेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड द हाउस फेवरेट प्लेसेस तो वो कुछ भी कहानी हो सकती है that is one. There's another series that we'll talk about it. But as Neeti was saying, कि everything has to be story. हर चीज मतलब it doesn't have to be a direct conversation, right? I think it just becomes very easy. एक और example है, बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे toys फैला देते हैं, whether it's school or at home. Yeah, that one. And all over the home, right? और जब आती है बात समेटने की to wind up, I'm tired. What? Why? You were playing. Do it. No, they don't understand do it. What they will understand that there's a Mr. Monkey, there's Mr. Mat, those are alphabets. If they have blocks or any other stuffed toys, all the toys have to go back to bed in their house. The house is a little drawer or a little cupboard. They want to snuggle together. They want to be together. So let's say goodbye. And then any song you guys can have. And that's how I do it at home actually. We have a song. It's tick tock goes the clock. What does it have to say? It's time for us to wind up the toys and put them all away. And I keep singing. And once you start doing it yourself and you say, good night, it's time to go and sleep. Trust me, the kids are going to start putting them away, thinking that actually they have a bed. The toys have a bed, Yep. a little home of their own. And yeah, so that's how they relate. It's one with the universe. That's the idea. That's the concept. Because हम बचपन से खुद भी when our parents used to tell us कि ऐसे मत करो वैसे मत करो यहाँ मत बैठो we still don't like it. We talk to our elders, my father even right now because he's stubborn, he's 80 and he still tells me I think you guys should not do this and I still feel that कि ये ऐसे communication now I understand कि ऐसे नहीं होना चाहिए. So the buck stops with me. I will add sensitivity to it और उसमें मज़ा क्योंकि वो अगर मज़ेदार नहीं होगा मेरे लिए सबसे पहले तो एज ए पेरेंट मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगा वो डेली बेसिस पे नहीं हो पाएगा और वो छोटा छोटा एवरी डे थिंग सो इट डजंट हैव टू बी लाइक विद टॉयज और गेम्स वो आपकी जो इंडिविजुअल टाइम है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आपकी पर्सनैलिटी है आपकी जो दुनिया है उसमें से चीज़ें अब्जॉर्ब करके ले जाएंगे तो वो अच्छा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें या कुछ भी बट व्हेन वी आर डूइंग आवर फैमिली स्टोरी टेलिंग वो हमारी इमेजिनेशन उसमें खुलती है और उसमें एक सिंप्लिसिटी होती है उसमें ऑनेस्टी होती है उसमें कोई बड़ी बड़ी कंपनीज का गेम डिजाइंड गेम नहीं है जिसमें कि यू हैव टू हैव अ सर्टेन IQ लेवल और एज लेवल एंड ऑल दैट लाइक अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू ये लॉकडाउन में शुरू हुई एक और कहानी की सीरीज अगेन एट द सेम वे कि वी हैव टू अचीव समथिंग लेकिन अब सब्जियां खानी है करेला खाना है लेकिन करेला नहीं खाना है इनको आलू चाहिए या पनीर चाहिए या फिर अपनी फेवरेट चीज़ें चाहिए हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट सो वन डे एक्सीडेंटली इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अ ग्राफिक नॉवल विच इज़ अबाउट भगवान शिव और मेरे लिए मिथ मतलब वो ऐसी स्पिरिचुअल राइटिंग्स या इन चीज़ तो मेरा पर्सनली काफ़ी कनेक्ट है कि मैं समझना चाहता हूँ चाहे वो अमीश की बुक्स हों या किसी की भी बुक्स हों तो भगवान शिव उस मोड में चल रहा था कि उनकी बात सोच रहा था सडनली आई सेड यू नो व्हाट
एक दिन भगवान शिव बैठे हुए थे. कहाँ बैठे हुए थे? He was on a mountain. कौन सा माउंटेन था? वो उनका घर है कैलाश माउंटेन पे. वो वहाँ बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे थे. और नंदी को भूख लगी थी. अब नंदी वहाँ बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि शिव जी कब आंखें खोलेंगे. तो शिव जी तो मेडिटेशन कर रहे थे. फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने खुली, नंदी ने कहा कि शिव जी मुझे बहुत भूख लग रही है आज. तो शिव जी ने कहा अच्छा, मुझे तो कुछ अच्छा अभी बनाना नहीं आता है, तो एक काम करते हैं, ये मानसरोवर लेक है, उसके उस तरफ मुझे ना स्मोक दिख रहा है, तो वहां चलते हैं. तो नंदी ने कहा कि आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए, हम चलते हैं. सो नाउ दिस इज द प्रेमाइस विच इज सेम एवरी डे एट फूड टाइम. जिस दिन भी वो खाना नहीं हो रहा है, तो अब उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि यहां पर पार्वती जी हैं, और वो बहुत सुंदर सा एक वो वहाँ पर हट है, कुटिया है, और उसमें वो खाना बन रहा है. उन्होंने पूछा कि हमें बहुत भूख लगी है. उन्होंने कहा अरे खाना तो मेरा आज खत्म हो गया, क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए करेले की सब्जी बनाती हूँ. तो करेले की सब्जी में, सो आई एम ऑल्सो लॉट इन टू कुकिंग. तो मुझे मतलब लॉकडाउन में शी वॉज हैंडलिंग ऑल द क्लीनिंग, आई वॉज डूइंग ऑल द कुकिंग. तो रेसिपीज वो अब वो चीज़ कि मैं रोज़ सब्जी बना रहा हूँ. तो पार्वती जी ने कहा कि नंदी तुम मार्केट से जाओ, टमाटर ले आओ, करेला ले आओ, प्याज ले आओ, ये 2-3 चीज़ें जो भी कुछ है मसाले. जो बेसिक रेसिपी कि उन्होंने पहले प्याज डाले कढ़ाई में, फिर उन्होंने कहा कि पानी चाहिए. तो नंदी ने कहा कि मैं जाके लेक से ले आता हूँ. फिर सब्जी को धोया, फिर उसको काटा और उसमें डाल दिया, और फिर शिवजी ने, नंदी ने बैठ के करेले की सब्जी खाई और बहुत मज़े से खाई. एंड ऑल दिस टाइम द बाइट्स आर गोइंग इन. वही करेले की सब्जी इज गोइंग इन. सो नंदी को जो टेस्ट आ रहा होगा वो मुझे भी आ रहा है. तो वो रिलेटेबिलिटी बननी शुरू हो गई. नंदी को और शिवजी को अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है, बिकॉज शिवजी इज द मोस्ट पावरफुल एंड इज अ कूल गाय, तो ये तो अच्छी चीज़ है, तो खानी चाहिए. तो हर रोज़ ये होना शुरू हो गया. तो एक दिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, बिकॉज स्टोरी से क्या है, यू नो इट, वेयर लॉट ऑफ अस गो रॉन्ग, वेयर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो गो रॉन्ग, विच आई थिंक हमने कुछ महीने किया शुरू में, कि सामने स्क्रीन रख देते थे, आईपैड रख दिया. अब आईपैड से उनका कॉन्शियस माइंड डाइवर्ट हो गया, तो उनको आप कुछ भी खिलाते रहो, कुछ भी खिलाते रहो. बट इफ यू स्विच ऑफ, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक दम अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, राइट, हम नहीं चाहते कि वो स्क्रीन्स पर. और ये कहानी होने से वही कॉन्शियस माइंड डाइवर्ट हो गया, उसमें माइथोलॉजी भी आ गई, उसमें एंटरटेनमेंट भी आ गया, उसमें स्क्रीन नहीं है और आपकी इमेजिनेशन है. तो वो अगेन इट इज, वी मेट दिस स्टोरी बाय एक्सीडेंट, it was not planned. तो it's like, you know, Neeti has this tattoo, you know, कि what you seeking is seeking you back. तो अगर आप वो जवाब सृष्टि से, वो यूनिवर्स से you thinking I want to do something fun with my boy or with my girl, वो कुछ मिल जाएगा, right? And I think जब भी आप story सुनाए, you know, try, even if it's a book, you know, one line, one rule, if the bite stops, the chewing stops, the story stops. Whoops, sorry. So, you know, I mean, even if this child says, Mama, aage, sorry, wo muh nahi chal raha. You know, bite, chewing. So that goes on, the story goes on. Little things, you know, just another, you know, you have to understand, storytelling is more like soul touching and heartwarming to a child. क्योंकि they are eventually in the land of wonderment. वो अभी भी मतलब if there are all these kids and I were to sit them, make them sit one side, and if all the tiffins come out with whatever parathas or sabzi or dal, I can ensure you in half an hour सबके टिफिन खत्म होंगे, because I will involve them in a story. और मुंह चलना चाहिए, खाना खत्म होना चाहिए, स्टोरी चलती रहेगी. You know, story gets energy when you chew. Yeah, that, sorry, I'm sure some of the mothers want to ask a few questions. Oh, the principal wants to ask a question. The big mother wants to ask. Big mama, here is the mic. 5 करोड़ रुपए का प्रश्न हमारे सामने. I'm not used to so much of attention. One thing is, you both are great storytellers. Stories are something that come to you naturally. Yeah. What would be the advice you would give parents? Because not everybody is a storyteller, or they Agreed. haven't found that in themselves. I don't believe that
humans can't tell stories. Every human Everybody can. But probably they haven't found that in themselves. So, what would your advice be to parents who are skeptical or who still doubt themselves? I think the first step to easy storytelling, and this is for everyone, is go back to your childhood. Usme, I'm sure every one of us remembers something on a day-to-day basis. Even something as simple as हम जल्दी उठते ही नहीं थे, या before going to school वो दूध का ग्लास नहीं खत्म होता था. You're just sitting with a glass of milk and you're just sitting. Or it could be anything about your friends in school, Maybe something sitting from chit-chatting. You're a front bencher, you're a back bencher. It's about not liking those pair of socks while getting ready. It could be not liking that particular teacher, sorry, but it's with all. So all of that, it could be anything. It could be that one particular senior you don't like, one particular friend that you really loved, or bunking school or anything. I'm not saying bring in the bad connotation, but any of that experience, usse aap shuru kijiye. And I'm telling you, ek bari you start and you start connecting the dots. It'll come naturally to everyone. Just have one little incident of memory, and that's easy for all of us. Childhood memory, kuch bhi ho sakti. It could be nani ka ghar, it could be cousins, it could be just going to the market, it could be just remembering one particular sabzi wala, it could be anything. I can immediately on the spot just come up with a story of a sabzi wala who used to just come every day, और वो एक तरीके से चिल्लाता था, एक टोन होती थी, and वो एक सब्जी आती थी, और आज वो सब्जी बनी, और and then you could just go back to maybe creating characters out of sabzis. वहाँ थे हमारे Mr. Karela. It could not be Mr. Karela. It could be just Bindi Rani, something. भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा. It could be stories around that. ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इतने पक्के दोस्त थे, सब साथ रहते थे, हर रोज शाम को खेलते थे. फिर एक दिन करेले की टर्न आई थी कि वो डेन बनेगा, और इतना भागा, एंड दिस इज स्टोरी, और आपकी बाइक चल रही है, खाओ बेटा, मुंह खोलो, एंड दे विल, आई एम टेलिंग यू, दे विल बी लाइक अच्छा, फिर for them it's like अच्छा. And वो जो आपने बिल्कुल सही बोला कि normally parents को, and especially this challenge I also faced, and I'm sure not at the sake of sounding कि a male centric approach, लेकिन वो एक है कि mothers are definitely spending more time and women are gifted with sensitivity. मैं एक कलाकार हूँ तो एक बात अलग है, मैं एक पोएट भी हूँ और एक म्यूजिशियन भी हूँ, तो मुझ में वो सेंसिटिविटी है, लेकिन एक एवरेज मेल में कंपेयर टू अ वुमन सेंसिटिविटी वो थोड़ी सी कम है. तो हम शुरू से हम बिल्कुल क्लीन थे, हम बिल्कुल सेंसिटिव और शांत और अच्छे स्माइलिंग हैप्पी थे. हम धीरे धीरे करप्ट हो गए सिस्टम. हम लेकिन वो चीज़ नहीं चाहते फॉर आवर ओन किड्स. हम चाहते हैं कि वो इनोसेंट रहें, वो हैप्पी रहें. तो हमारी जो भी कुछ कहानी है, स्पेशली अगर आपको बिल्कुल कहानी सुनानी नहीं आती है, जो भी देसी चीज़ है, मतलब अगर आप पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, कुछ भी जो हमारी फोक टेल्स हैं, घर में जो कहानियाँ सुनी हैं, और कुछ भी आप बना सकते हैं, कीपिंग इट सिंपल. एक सिंपल टेम्पलेट हो. अब जैसे पंजाबी, मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ और मैं वही जो लाहौरी पंजाबी मेरे घर में बोली जाती थी कि वो साफ दिल्ली वाली नहीं, वही हो. तो धीरे धीरे वो शब्द हमने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए. Another example, I think we can really talk about कि how we got K, K, G and ABCD introduced to him through couplets. वो हमने लॉकडाउन में और पीछे भी इस साल में भी, हर आइडिया वाज कि अगर हम सॉन्ग्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं क, ख, ग को और ABCD को, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. I'll give you a simple example. This you could probably play around with your kids also and have fun. They could be as old as, I'm guessing he is 2.5 or 3, to maybe a 7-year-old, Neil and I went to the land of alphabets, and we climbed a tree. Now, I have grown up reading a lot of Faraway Tree, the land of, topsy-turvy, jab aap, you go up on the faraway tree. So I derived the idea from there. Now Neil and I went to a land of alphabets, और वहाँ पे we met Alice. Alice was sitting at an acorn tree, and she was
eating a lot of, and she had apples in her bag. The sound of A as A, it kept coming, it kept coming. I did not say anything about A, what is being introduced. We were just starting a story and the sound of it. And then we went further in the forest, and there was a beautiful butterfly with a little bunny rabbit and a big fat bear, and they all were sitting, and there was a bumblebee who was going buzzing around. It's burr. So you know that's, and then we had little songs around it. Same चीज़ हमने की हिंदी के अक्षरों में कि अगर क है तो उसमें क में एक कहानी शुरू करते ना कि अगर वहाँ पे वी हैड इनफैक्ट नील कौन सी थी वो कहाँ है वो क से कौन सी थी चिड़िया का नाम क्या था सो ओके न्यू प्लेस या shy. So it could be anything. I mean, अगर कोकिला एक चिड़िया का नाम है या कनक कनक चिड़िया थी बहुत दूर तक उड़ रही थी पेड़ पे आके बैठी और उसने नीचे एक कोमल कोपल कमल देखा. This is all because he is very good in Hindi. तो Sachin helped me with this. Story मेरी अपनी चल रही थी but उसमें we always kept in mind कि आप enriching words introduce करें. You know, if it's Hindi, introduce rich Hindi words. कि वहाँ पे नीचे तालाब था तो वहाँ उस तालाब में तर तर तालाब तैरे तीन तैराक. पहले जब ये सचिन ने बोला मुझे समझ में नहीं तैरे तीन तैराक. He explained it to me. The beauty is आप ये सारी चीज़ें if you tell it to the child, अगर स्टोरी आगे बढ़ रही है, not once will the child ask you the meaning of a particular word because उनको already समझ में आ रहा है. They're absorbing it. उनको मजा आ रहा है. तर उस तालाब में कौन थे? वहाँ था मनु मेंढक, वहाँ था मगरमच्छ और वहाँ थी मंजरी मछली. म कनक चिड़िया का क, कोमल कोपल कमल था उस तालाब में क. तो बच्चों को ये मज़ा आता है और हिंदी में वो अच्छी भाषा ही तो सीख रहे हैं, शब्द सीख रहे हैं, उसका यूसेज सीख रहे हैं बिकॉज वो स्टोरी में कैसे वीव इन कैसे ब्लेंड हो रहा है. एंड दैट गोज़ फॉर इंग्लिश एंड दैट गोज़ फॉर हिंदी. आई मीन आई वाज लिटिल थिंग्स दैट वी डिड with some drawings also. I'm bad at drawing, okay? I'm a left hand when it comes to drawing, but I did it. I tried. And it really worked. You know, it gets inside their mind. Concepts कुछ भी clear करने हैं बच्चे के, instructions देने हैं, काम करवाना है, very important. You need to make your child do a lot of things at home. And it's only through stories. And it works. हमारे लिए एक चिंटू है. Chintu is our character. So, Neil is not brushing his teeth in the morning. I don't want to brush my teeth. I don't want to take a shower. All right. You know, Chintu भी कर रहा था. And just 2 days back, Chintu was also saying कि नहीं मुझे brush नहीं करना. And then जब Chintu school गया तो सबने कहा उफ ये कहाँ से ये तो कहीं से smell आ रही है. You know, that's how story goes on. But वो Chintu की कहानी है. And Neil will be like अच्छा हाँ brush. I will do it right now. So it's And that goes for all the kids, every single child. एंड आई थिंक मैम जो आपका बहुत वैलिड एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टोरी टेलर नहीं है तो वो इसलिए नहीं है शायद वो अपने आप से बहुत ज़्यादा सीरियस है. फॉरगेट अबाउट किड्स राइट नाउ. क्या मैं मज़े कर रहा हूँ? क्या मेरे लिए मज़ा सिर्फ दोस्तों के साथ बैठ के चिल करना है, वो मूवी देखना है या नेटफ्लिक्स हो मोबाइल फ़ोन? नहीं. अगर मैं अपने आप से जेन्युइनली खुश हूँ, कैन आई हैव फन अलोन? इफ आई कैन, आई एम इन अ हैप्पी जोन. क्या मैं सच में खुश रहता हूँ अकेले, स्माइल करता हूँ? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब पैशनेटली मुझे खुशी देती हैं? वी हैव टू डू दैट. वी हैव टू लाफ मोर, वी हैव टू स्माइल मोर. अब जैसे ही वो करना शुरू होंगे ना, I'm telling you, let's just try it right now. Actually, I'm just saying it. Dynamic, multitasking people. Let's just try it out. So I want to give 3, 2, 1, and especially you're not smiling much. See, I hope you had a good time. you're working. All of us we are working. और हम parents भी हैं, है ना? तो इसलिए. So 3, 2, 1, we'll laugh together. I know you're- जो भी सबसे अजीब तरीके से हंस सकता है, let's just do it right now. So अभी आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, लेकिन हमें जोर से हंसना होगा. 3, 2, 1, can we laugh together? You laugh very nicely. What was it?
Do it again. That was very nice. Come here, come here. Do you want to laugh together? Who all wants to laugh with us? Funniest laugh. Neem, you want to do funny laugh? Mr. Laughter, there's Mr. Laughter coming to tickle us. Come here, come here. अभी आपको रूम में दिखाई देंगे Mr. Laughter. What's your name? Anika. And? Come here. Okay, you come here. आपको पता है Mr. Laughter is here. और बड़े बच्चों में से भी कोई आना चाहता है तो प्लीज Come, come, come. जितना अपने आप को लाइट आप जिंदगी में रखेंगे और लाइट हार्टेड रहेंगे. What's your name? Sia. I have all the friends coming. What's your name? Holy Baba. Ritima, why? Okay, हम अब सब जोर से हंसेंगे, ठीक है? So Mr. Laughter है यहाँ पे, एक है यहाँ पे Mr. Laughter, okay? वो बहुत फनी है, लेकिन वो बात ही नहीं करते किसी से. वो पता है बात कैसे करते हैं? वो तभी करेंगे जब हम जोर से उनको हाई बोलेंगे, और उनका हाई कैसे होता है? जब हम जोर से लाफ करेंगे, ठीक है? तभी मिस्टर लाफ्टर आएंगे और बहुत मजा आता है जब वो आ जाते हैं, ठीक है? So 3, 2, 1 और कस की हंसेंगे. आप कैसे हंसोगे? I'm telling you, this is better than any video game, Absolutely. any cartoon that you can put it if you just do silly things every day at home. जो अजीब लगती है ना, ये थोड़ी ना करना होता है, वो करना है. और आप वो धीरे धीरे घर पे, मैं बता रहा हूँ, we have a weekly day, Friday. Neil, Fridays or Saturday? When do we do TV day? Okay, Friday. So we have Friday, 1 hour, and that's it. उसके अलावा घर में टीवी की डिमांड ही नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि मज़ा बिना टीवी के हो रहा है. अब हाँ, दोस्तों से मिल रहे हैं, बाकी एक्सपोजर है, वो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, अच्छा मुझे भी देखना है और समथिंग, एंड व्हाई नॉट. मतलब वी कांट जस्ट कंप्लीटली एलियनेट हिम. तो वो, लेकिन एज अ फैमिली हम मज़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप कहानियाँ बनेंगी, अपने आप मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप कहेंगे यार. एंड देन यू कैन शेयर दिस विद, यू नो, आपको खुद में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं तो क्रिएटिव हूँ. मुझे कहा जाता था कि जस्ट बिकॉज आई एम अ बैंकर और आई एम इन आईटी और समथिंग, एंड ऑल ऑफ अस वी आर क्रिएटिव एट आवर जॉब्स. जस्ट बिकॉज मैं आर्टिस्ट हूँ इसका मतलब थोड़ी ना मैं क्रिएटिव हूँ सिर्फ. आप सभी तो क्रिएटिव हैं. ऑल ऑफ अस वी आर क्रिएटिंग वेल्थ, वी आर क्रिएटिंग, यू नो, रिसोर्सेज फॉर आवर फैमिली, वी आर क्रिएटिव. तो वो जो आप कर रहे हैं, वो उसको बस थोड़ा सा, बस इतना सा रियलाइन करना है, एंड जस्ट डू दिस. यू डोंट नीड गेम्स, यू डोंट नीड पिक्शनरीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैंसी गेम्स, नथिंग. 4 पत्थर ला के घर से आप, मतलब पार्क से लाइए, उसको पत्तियां इकट्ठी करिए. यू कैन, व्हाट वाज दैट लीफ, मिस लीफ, so वो नेचर्स बास्केट, ही यूज्ड टू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द पार्क, ही यूज्ड टू गेट लीव्स एंड ट्विग्स, स्टोन्स, कुछ भी. उनसे कहानी बन गई. वो आज वो उस विलेज में ये लोग हैं, वो कल को वो हट जाएंगे, सूख जाएंगे, कोई और आ जाएगा. सो इट कैन जस्ट हैपन. That's it. If you have any questions. Yes. Yes, sir. 44-year-old करेला खिलाने के लिए, वो जैसे वो, मैंने कहा वो शिवजी वाली कहानी शुरू हो गई. लेकिन वो क्योंकि मैं चाहता हूं, और वो हमेशा जो काम करेगा सक्सेसफुल रहेगा, दैट इफ इट कम्स फ्रॉम यू, इफ इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो इतना सिंपल होगा ना कि जैसे हम सोशल मीडिया पे भी कहते हैं, व्हेन यू फॉलो सम पीपल, यू नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. लाइक नीति इज नोन फॉर हर रील्स ऑन मेकअप एंड हैक्स, यू नो, शी इज डूइंग दैट. आई एम नोन फॉर म्यूजिक. सो something that you're really good at, something which is a part of you. What's your name, sir? Ashish. So you're in what profession are you in? I'm sorry? Oh, lovely. So you like run an acting school or something? See, you have punchlines already. Yeah, exactly, you have it. People are genuinely like, this is the great punch. So वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और जो आप में है ऑलरेडी, उसको बस थोड़ा सा वो मिट्टी हटाना है. और वो मिट्टी हमारी समझ की है ना, वो माइंड की है. तो माइंड को हटाना है और मन को, हार्ट को, कि लॉजिक नहीं सोचना है. जिस दिन आपने लॉजिक ड्रॉप कर दिया, आपको कहानियां आनी शुरू हो जाएंगी. एंड समथिंग, लेट्स से
आपका जो कैरेक्टर हो सकता है, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो यू मच, बट जस्ट ऑफ द हैट, कि आशीष का दोस्त है, वो हर रोज कुछ नया कपड़े पहन के आ जाता है, उसको नया बनना है. आज जो चिंटू है या आशीष ही है फॉर एग्जाम्पल, आशीष को आज जोकर बनना है, या आशीष को आज सुपरमैन बनना है, या आशीष को आज टीचर बनना है, या फिर फायरमैन बनना है. आशीष वही है कहानी का. तो एक चीज, दो चीज वेरिएबल, बाकी सब रोज. इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको रोज नया प्लॉट नहीं चाहिए. नो कैरेक्टर्स, सेम कहानी, उसमें बस आज लाल रंग की बजाय नीला रंग, नीले रंग की बजाय ब्लैक, बस. I'll tell you what, for a simple example, बच्चे अब जैसे अगर यहाँ भाग रहे हैं, सेशन चल रहा है, just have walking shoes, running shoes, and jumping shoes. Walking socks, running socks, jumping socks. They were 3 friends. And our carpets are also friends with them. Now every time now he's... So that's a story that I have told him because, you know, in school when they have carpets and socks, kids can slip very easily. So this is a story I told him and he has kept it in mind and he's further gone and told his school friends and now they all know that acha hamare walking socks hain, running socks hain and jumping socks hain. And how, who was friends with who. So walking socks are best friends with carpets and carpets को बहुत तंग करते हैं jumping socks and running socks. और इसीलिए carpets कभी-कभी क्या करते हैं, a little nudge and a little tickle and a little wiggle and they make the jumping socks and running socks fall down. And then what happens? Whoopsie, you've gotten hurt. So then it's as simple as that. Okay, now I don't think we can ever put a stop to storytelling, which is as infectious and आपने 2 रेडियो वालों को बिठा दिया है कि जिनको बातें करने का शौक है, and you've given them an audience. Yeah, I know, but like Yes. we said, रेडियो की भी एक होती है ना 8 बजे. नहीं, बस आई Yes, थिंक हम yes, बस wait. बच्चों के साथ एक बार हंसने के बाद we are just going now. Yeah. So let's do this laughter one last time. Once again. You want to laugh? I want the candy. See? But if you laugh with me, then I'll give you more candies. Very good. All of you can give yourself a laughter and that's it. Ashish, you want to laugh? Yes, that's her. That's great. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Akshada, could you just do the honors to thank them for Very the gift. absolutely wonderful afternoon that we have had. Very good. Thank Gift you, देखा मैंने Neeti. बोला था. Wow, thank you. We're getting मैंने gifts बोला था also. gift मिलेगा. Very nice. Thank you. स्टोरी सुनाए गिफ्ट मिलता है सर देखिए. Thank you very much. Wow. Thank you. Wow. Thank you. That Very was nice. indeed, put your hands together. Wonderful afternoon. Thank you, guys. Thank you very much. so much. Thank you, babies.